Dear students, today I am going to explain the poem The Skylark from your book Class 5. Dear student, this is a poem written by Christina Rossetti, who was born in London. She began writing poetry when she was a teenager. That means when she was only in her teenage. She started writing poem and her poem soon became very popular. In this poem, she describes the song and the flight of a skylark on a bright morning. Dear students, skylark is a very beautiful bird, and especially the sound and the music of the skylark's voice is very melodious to listen. So let us start and see what she is describing about. And before describing, I would like to tell you that this Christina Rossetti poetess was very much fond of nature, and she always tries to depict the nature in her poems. Open your book at page number 52. Now let us start. You also start reading with me. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. Dear students, morns means morning. A skylark hang between the two, a singing speck above the corn. The earth was green, the sky was blue. Dear students, as you all can understand here, the earth was green. That means everywhere on the earth there was some greenery. There were crops grown in green color, very beautiful. And the sky was blue in its natural color, looking very cool. I saw and heard one sunny morn. Sunny morn means a morning when the sun is there in the sky, when it is bright. A skylark hang between the two. The skylark is appearing to be hanging between the sky and the earth. A singing speck above the corn. It is just like a dot. Speck means a dot. So what is the skylark looking? Skylark is appearing to be a dot in between the green earth and the blue sky. Here she is trying to tell that the green earth is always covered with crops, that is the symbol of prosperity, and the blue sky with sun is the symbol of happiness and prosperity once again. So यहाँ पर poetess nature की सबसे beautiful सीन को डिस्क्राइब कर रही है और स्काईलार्क बर्ड को वो बता रही है वो छोटा सा एक डॉट जैसा दिख रहा है. इट इज जस्ट लाइक अ डॉट. सेकेंड पैराग्राफ. अ स्टेज बिलो इन गे accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. A stage below in gay accord. Just below, we have to what we can notice was it was in a gay accord. Gay accord means in a it was just matching with the harmony, the happiness of the nature. अभी मैंने आपको बताया था कि green earth and blue sky represent the happiness and cheerfulness, the prosperity. और उसी के स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? White butterfly danced on the wing, and still the singing skylark soared. White butterflies are also seeming to be dancing on their wings. When the butterflies move their wings, it looks as they are dancing. And still the singing skylark soared. और अभी भी जो skylark जो अपना गाना गा रही है, मेलोडियस सॉन्ग गाते हुए वो सोरिंग कर रही है. SOARED, soared. Soared means to fly high in the sky in the position of diving. जैसे कि वो डाइविंग कर रही है, जोर से अपना फ्लाइंग करते हुए, डाइव करते हुए गोल गोल सर्कल्स में मूव कर रही है with the showing of happiness. And silence sank and soared to sing. And what is the silently it is sinking downwards and then again flying upwards in circular motions, and it is also singing while it is soaring in the sky. Sky में उड़ते उड़ते वो गाना भी गाते जा रही है, and it seems that it is also very happy, as the nature is happy and the skylark is also happy. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. The poetess is, as you can see in the picture also, the poetess is walking through the fields, and on her both the sides she can see the corns growing.
उसके दोनों तरफ फसल उगी हुई है, कॉर्न की फसल है, यू कैन सी, और वो वहाँ से गुजर रही है. शी इज जस्ट पासिंग फ्रॉम देयर एंड व्हाट शी कैन सी, द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन. कॉर्न के फील्ड्स में कॉर्न का कलर कैसा दिखा रहे हैं, टेंडर ग्रीन. टेंडर मीन्स वेरी सॉफ्ट ग्रीन, वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट. वो हरा कलर जो देखने में बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग लग रहा है, ब्राइट लग रहा है. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन. पोएटेस इज सेइंग दैट उसको पता है कि उसका कोई नेस्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्काइलार्क का नेस्ट यहीं कहीं किसी क्रॉप के बीच में है. समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स. ये जो स्टॉक्स हैं, जो कॉर्न के प्लांट्स हैं, उसको वो क्या कह रही है, कितने हैं, मिलियंस. मिलियंस मीन्स अनकाउंटेबल हेयर. यहाँ पर वो बताना चाहती है कि जो क्रॉप है, जो कॉर्न के फील्ड्स में जो कॉर्न के प्लांट्स हैं, वो मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं और उसी में किसी एक में उस स्काइलार्क का नेस्ट हो सकता है. शी इज जस्ट हैविंग द प्रोबेबिलिटी. वो शायद सोच रही है कि यहीं कहीं उसका नेस्ट है. एंड एज आई पॉज टू हियर हिज सॉन्ग while swift the sunny moment slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. और वो वहाँ पर क्या करती है, she is taking a pause. Pause means to stop for a while. थोड़ी देर के लिए वो वहाँ ठहर कर देखती है कि उसका सॉन्ग कैसा है. She wants to listen. While swift the sunny moment slid. और धीरे धीरे, swiftly means smoothly, धीरे धीरे करके जो सनलाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लिड. स्लिड मीन्स टू स्लाइडिंग अवे, धीरे धीरे पास हो रही है, मतलब सन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सनलाइट डिमिनिश हो रही है. परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग. शायद उसका जो मेट है, मेट मीन्स पार्टनर ऑफ द स्काइलार्क. मेट का मतलब होता है उसका फ्रेंड, उसका नियर, उसका लविंग पार्टनर. वो शायद उसका सॉन्ग कहीं बैठकर सुन रहा है. एंड लिसन्ड लॉन्गर देन आई डिड. और वो पोएटेस कह रही, जैसे मैं उसका सॉन्ग सुन पा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा देर से उसका जो मेट है वो उसका सॉन्ग सुन पा रहा होगा. दिस पोएम इज रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द नेचर and the music of the skylark bird, which is also represented as the bird of happiness, bird of love. Thank you for watching.